Hello students, I welcome all of you in this Talk in English class. I am Navdeep Singh, your English teacher, and I have come with some best and easy ways that will certainly help you to speak fluent and good English. It is everybody's dream to be a good speaker of English language. ਸਾਡਾ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਸੁਪਨਾ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਬੋਲਣੀ ਆਉਂਦੀ ਹੋਵੇ. So beta, yes, you can definitely fulfill this dream of yours in a very short time. ਬਹੁਤ ਥੋੜੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਆਪਣਾ ਜਿਹੜਾ ਸੁਪਨਾ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਸਪੀਕਿੰਗ ਦਾ ਉਹਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ. For that, I have noted down a few points that I'm going to discuss with all of you. So to achieve or to fulfill this dream, what we need is, first of all, that is determination. ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਾਨੂੰ ਕੀ ਚਾਹੀਦਾ if we want to be a good speaker of English language, that is determination. Be determined. From determination, I mean to say ਪੱਕਾ ਇਰਾਦਾ. ਆਪਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਪੱਕਾ ਇਰਾਦਾ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਉਹ ਆਪਾਂ ਆਲਰੇਡੀ ਕਰ ਲਿਆ ਹੋਇਆ. We are all ready to start learning speaking English or to start practicing speaking English. So ਮਨ ਆਪਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਬਣਾ ਲਿਆ ਹੋਇਆ. ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਆਪਾਂ ਪੱਕਾ ਇਰਾਦਾ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਇਹ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ. This is the most important thing. So you all are determined. So next thing is be confident. We need to be very very confident. ਆਪਣੇ ਅੰਦਰ ਇੱਕ confidence ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ. ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ confidence ਕੀ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ yes I can, ਮੈਂ ਕਰ ਸਕਦਾ, ਮੈਂ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਦਾ ਸਪੀਕਰ ਬਣ ਸਕਦਾ, ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਬੋਲ ਸਕਦਾ. Yes, so always say to yourself that yes I can. So this will definitely build up your confidence level. So be very very confident. Other important thing is remove hesitation. So this hesitation is a big obstacle that stands in the way to speak in English. एक बहुत वड्डी एक अड़चन आ, एक रुकावट आ साडी इंग्लिश स्पीकिंग दे विच ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਹੈਜ਼ੀਟੇਸ਼ਨ ਹੈ. ਹੈਜ਼ੀਟੇਸ਼ਨ ਸਾਨੂੰ ਕਿਹੜੇ ਗੱਲ ਤੋਂ ਹੁੰਦੀ ਆ ਕਿ ਮੈਂ ਅਗਰ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਬੋਲਾਂਗਾ ਉਹ ਮੇਰੀ ਕੋਈ ਮਿਸਟੇਕ ਲੱਭੇਗਾ, ਉਹ ਮੇਰੇ ਵੱਲ ਵੇਖ ਕੇ ਹੱਸੇਗਾ. ਸੋ ਬੇਟਾ, it's a request to all of you that you all have to disregard any such remarks or things that stops you to speak in English. ਇਹਨਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ you don't need to react. Actually ਸਾਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ react ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ. We have to disregard any such things. ਆਪਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਪਰਵਾਹ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ. So please remove your hesitation. Don't be hesitate. ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ confident ਹੋ ਜਾਓਗੇ hesitation ਤੁਹਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਆ automatically ਹੌਲੀ remove ਹੋ ਜਾਏਗੀ. Next is ਬੇਟਾ stop worrying grammar or grammatical mistakes. ਆਪਾਂ grammatical mistakes ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਹੋਣਗੀਆਂ because we are just at the beginning stage. ਆਪਾਂ ਅਜੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨਾ. So at this point we need not worry about any grammatical mistakes. ਇੱਥੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕੁਝ ਮਿਸਟੇਕਸ ਰਹਿ ਵੀ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਹੋ ਵੀ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ ਬੇਟਾ, ਤੇ ਆਪਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਚਿੰਤਾ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ. So just keep on speaking English. So there are basically two things that we need to speak any language. One is vocabulary, that means words. ਸਾਨੂੰ ਦੋ ਚੀਜ਼ਾਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਕੋਈ ਵੀ ਭਾਸ਼ਾ ਬੋਲਣ ਵਾਸਤੇ, ਉਸ ਭਾਸ਼ਾ ਦੇ ਸ਼ਬਦ ਤੇ ਰੂਲਸ ਯਾਨੀ ਕਿ ਗ੍ਰਾਮਰ. ਸੋ ਵੋਕੈਬਲਰੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਹੈ ਆ ਜਿੰਨੀ ਸਾਨੂੰ ਚਾਹੀਦੀ ਆ, ਤੇ ਗ੍ਰਾਮਰ ਜਿਹੜਾ ਬੇਟਾ ਉਹਨੂੰ ਅਜੇ ਆਪਾਂ ਇਗਨੋਰ ਕਰ ਦਈਏ because someone has rightly said that something can be conveyed without grammar but nothing can be conveyed without vocabulary. ਜੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਸ਼ਬਦ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਬੋਲ ਸਕਦੇ, ਬਟ ਜੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਸ਼ਬਦ ਹੈਗੇ ਆ ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਐਟਲੀਸਟ ਵੀ ਕੈਨ ਸੇ ਸਮਥਿੰਗ. ਸੋ ਤੁਸੀਂ ਜੋ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਸ਼ਬਦ ਹੈਗੇ ਨੇ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਭਾਸ਼ਾ ਦੇ, ਇਸ ਲੈਂਗੁਏਜ ਦੇ, ਬੇਟਾ ਡੂ ਯੂਜ਼ ਦੈਮ. ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਯੂਜ਼ ਕਰੋ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੋਲੋ, irrespective of taking care of grammatical mistakes. Grammar ਦੀ ਚਿੰਤਾ ਆਪਾਂ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ. So next is do practice. So this is again the most important thing. Practice every day whatever you have learnt. ਜਿੰਨਾ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਉਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਰੋਜ਼ ਬੇਟਾ ਯੂਜ਼ ਕਰਨਾ, ਉਹਦੀ ਪ੍ਰੈਕਟਿਸ ਆਪਾਂ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਕਰਨੀ ਹੈ. ਸੋ ਪ੍ਰੈਕਟਿਸ ਐਵਰੀ ਡੇ. ਸੋ ਅਗਰ ਮੈਂ ਇਹਨੂੰ ਬਰੀਫ ਕਰਾਂ, ਇਹ ਜਿੰਨੇ ਪੁਆਇੰਟਸ ਆਪਾਂ ਡਿਸਕਸ ਕੀਤੇ ਆ, ਸੋ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਤਿੰਨ ਚੀਜ਼ਾਂ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲ ਕੇ ਆਉਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਂਦੀਆਂ ਨੇ. there are three things actually that we need. So first is
डिटर्मिनेशन। सब तो पहले तो आप इरादा किया कि आप इंग्लिश बोलनी सीखनी है। दैन इज़ इनिशिएटिव डैट वी ऑलरेडी हैव टेकन अप, आप इनिशिएटिव लै चुके हैं, असी स्टार्ट कर चुके हैं, शुरू करता होया। एंड नैक्सट इज़ प्रैक्टिस एवरी डे, डैट मीनस कंसिस्टेंसी। सो डिटर्मिनेशन, initiative and consistency, these three things, they will definitely help you a lot. Next, a few questions can come to your mind, like when to start, where to start and what to start. कि ਆਪਾਂ इंग्लिश कित्थों बोलनी शुरू करिए, कदों बोलनी शुरू करिए ते की बोलना शुरू किया जाए। सो इन्हां दे जिहड़े आंसरस ने इन्हां क्वेश्चनस दे, लाइक when to start, सो मैं कहांगा कि बेटा डोंट प्रोक्रास्टिनेट। फिर वही गल टाल मटोल नहीं करना, आपां कदों शुरू करिए, डैट इज़ टुडे ओनली, डैट इज़ नाउ। आपां अज तो ही शुरू करना, हुण तो शुरू करना इंग्लिश नूं बोलना। नैक्सट इज़ वेयर टू स्टार्ट, वेयर एवर यू आर, जिथे भी हो तुसीं उत्थों ही बेटा शुरू करो। सराउंड योर सैल्फ इन इंग्लिश। तुसीं किसी रूम च हो सकते हो, बीट योर बैडरूम, बीट योर ड्राइंग रूम, बीट योर होम, बीट योर क्लासरूम, street or bazaar or playground, anywhere, wherever you are, you can start speaking in English, because there you can see so many things. Try to name those things in English. You can see a few actions, try to say those actions in English. So the best answer to where to start is wherever you are. And last but not least is what to start. So let us start from सैल्यूटेशनस। सैल्यूटेशनस आर द ग्रीटिंग्स। जिस तरह बेटा आप नमस्कार, सत श्री अकाल, नमस्ते विश करते हैं। सो इन इंग्लिश लेट अस स्टार्ट फ्रॉम सैल्यूटेशनस। सो दिस इज़ द फर्स्ट स्टेप what we can start. So in the morning we need to greet whosoever meets us saying good morning. सवेरे सानू जो भी कोई मिलता फस्ट टाइम उन्होंने आप गुड मॉर्निंग विश करनी है। फॉर एग्जाम्पल योर ममा और योर पापा, योर डैडी, योर मम्मी वेक्स यू अप, दैन विश दैम गुड मॉर्निंग। उदों आप उन्होंने गुड मॉर्निंग विश करांगे इन द मॉर्निंग। सो इन द आफ्टरनून जो सानू दोपहर के समय सानू कोई मिलता है, हाउ वी कैन ग्रीट इज़ सेइंग गुड आफ्टरनून। उन्होंने आप गुड आफ्टरनून विश करांगे। तो शाम के टाइम ते ईवनिंग दे विच जो सानू कोई मिलेगा, इट कैन बी योर फ्रेंड, इट कैन बी योर ब्रदर, योर सिस्टर, योर एनी फैमिली मैंबर, क्योंकि आप इस वेले घर दे विच बैठे हुए हैं सारे। आप उन्होंने की विश करना, गुड ईवनिंग। एंड एट नाइट टाइम वैन यू आर अबाउट टू गो टू योर बैड, वैन यू आर अबाउट टू स्लीप, विश एवरी वन इन योर होम गुड नाइट एंड दैन गो टू स्लीप। उन्होंने सारे गुड नाइट विश करो तो फिर बेटा जाके सौ। सो दिस इज़ द फस्ट स्टैप। इत्थों आप जोड़ा वा इंग्लिश बोलनी शुरू करांगे। यस वेल आई नो सम ऑफ यू माइट बी थिंकिंग डैट यस ए तो आप बोलते ही हाँ, गुड मॉर्निंग विश करते हैं, गुड आफ्टरनून विश करते हैं, बट बेटा हुण तक तुसीं गुड मॉर्निंग गुड ईवनिंग विश किया है अपने टीचर्स नूं। सो देयर इन योर स्कूल यू डू दिस ग्रीटिंग जस्ट आउट ऑफ हैबिट। उत्थे सारे बच्चे कर रहे होंदे आ, तुसीं भी बोलते हो। देयर यू वॉन्ट फील लाइक एज यू हैव स्पोकन समथिंग इन इंग्लिश। उत्थे तुहानूं फील नहीं होया होएगा कभी भी कि तुसीं इंग्लिश बोली है, बिकॉज देयर इट हैज़ बिकम पार्ट ऑफ योर लाइफ। उत्थे पता किस तरह होना है, इस तरह सारे करते हैं, तुसीं भी शुरू तो करते आ रहे हो। बट मैनू जरूर दस्सिओ कि जो फस्ट टाइम तुसीं अपने घर अपने पेरेंट्स नाल, अपने ब्रदर सिस्टर्स नाल, अपने रिलेटिव्स नाल, फ्रेंड्स नाल ए सैल्यूटेशनस यूज़ करोगे, ए ग्रीटिंग्स यूज़ करोगे, एक अलग फील जी है बेटा वो तुहानूं मिलेगी। वो तुहानूं महसूस होएगा कि यस यू हैव सम स्पोकन समथिंग इन इंग्लिश। अपने पेरेंट्स नाल विश करियो, अपने ब्रदर सिस्टर्स नूं अगेन मॉर्निंग दे विच गुड मॉर्निंग, इन द आफ्टरनून गुड आफ्टरनून, इन द ईवनिंग गुड ईवनिंग, एंड बिफोर गोइंग टू बैड जस्ट विश गुड नाइट। सो बेटा दिस इज़ आवर फस्ट पॉइंट। आपां इनू शुरू करना तो असीं इनू कंटिन्यू भी करना। सो यू नीड टू प्रैक्टिस दीज थिंग्स एवरी डे। बहुत तुहानूं खुद नूं बड़ा चंगा लगेगा तो तुहाडे पेरेंट्स नूं, तुहाडे ब्रदर सिस्टर्स नूं, उन्हां नूं भी बड़ा चंगा लगेगा जो तुसीं उन्हां नूं इंग्लिश दे विच ग्रीट करोगे।
ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਮਸਕਾਰ ਕਰੋਗੇ। ਓਕੇ ਬੇਟਾ, ਸੋ ਦਿਸ ਇਜ਼ all about this class. So before I end, let me tell you that in the next class I will be discussing some magical words of English language with you that will certainly do magic in your life. So what will be that magic? What magic you are going to learn? I will disclose the things in our next chapter. So before I go, I would like to thank all of you for attending this class. And I would also like to request each and every one of you to please like this video and do subscribe and share my channel. Thank you so much.